नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शाहरुख कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एजुटेरिया का करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका इसमें आपका सब कुछ दिया गया एमसीक्यू से लेके आपका जो भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर है या फिर इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज वगैरह जो भी है, सारा इसमें दिया गया। और इसका हम लोग जो है अभी जो किताब के आखिरी में दिया गया 15 सेट प्रैक्टिस, उसी को हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। तो अभी हम लोग सेट प्रैक्टिस नंबर 6 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट प्रैक्टिस नंबर 6, और जिसमें हम लोग आपका क्वेश्चन और जो भी राइट ऑप्शन है उसी को पढ़ेंगे, पूरे ऑप्शन को नहीं डिलीट करेंगे। और ये वीडियो आपका रिवीजन पर्पज से बन रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से देखें, ठीक है। तो देखिए आपके सामने सेट प्रैक्टिस नंबर 6 आ गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी कंपनी लुकआउट हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड Hermetas spyware. Which statement is true regarding this? So one correct answer option B, all of the above. Hermetas spyware is capable of affecting Android and iOS devices. It is a commercial spyware and has been used by governments in northern Syria, Kazakhstan, and Italy. It was first detected in Kazakhstan in April 2022. Question number 2 है, where was the first Khelo India fencing women's league organized from 25 to 29 July 2022? The two का option है न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 3 है, India's first brain health clinic has been started in which city? तो 3 का ऑप्शन भी बैंगलोर कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 4 है, who has been appointed as the chief economist of the World Bank recently? तो 4 का ऑप्शन नंबर है इंदरमित गिल। क्वेश्चन नंबर 5 है, in which country will the women's ODI cricket world cup be organized in the year 2025? तो 5 का ऑप्शन भी इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, England's Leicester cricket ground is named after which Indian cricketer? तो 6 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सुनील गावस्कर। क्वेश्चन नंबर 7 है, with a view to promote rapid and inclusive growth in the local semiconductor chip manufacturing sector, which has become the first state in the country to announce the semiconductor policy 2022-27? तो 7 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 8 है, the country's first internationally built aircraft carrier INS Vikrant was inducted in the Indian Navy. It has been built by, तो 8 correct answer option number C, Cochin Shipyard Limited। Question number 9 है, which of the following matches with respect to the scheme campaign launched in July 2022? तो 9 correct answer है option number D, all of the above। चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम तमिलनाडु में, फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में, और चीफ मिनिस्टर सारथी योजना आपका झारखंड में। ये आपका तीनों सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 10 है, विच टाइगर रिजर्व हैज बीन अवार्डेड द सेकंड एनुअल IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 रिसेंटली? तो 10 करेक्ट आंसर ऑप्शन में औरंग टाइगर रिजर्व आसाम। क्वेश्चन नंबर 11 है, द वर्ल्ड फर्स्ट एंटी टोबैको बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री इन जुलाई 2022? तो 11 का ऑप्शन में सी न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 12 है, which country has signed a memorandum of understanding with Indian company with Indian Renew Power Private Limited for the construction of a green hydrogen factory in the Suez Canal Economic Zone, under which Indian Renew Power Private Limited will build a factory to produce 20,000 tons of green hydrogen annually with an investment of 8 billion? तो 12 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इजिप्ट। क्वेश्चन 13 है, which of the following has been declared as a human right by the United Nations General Assembly UNGA और 28 जुलाई 2022? 13 करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राइट टू हेल्दी इन्वॉल्वमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन? तो 14 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वोलोडाइमर जेलेंस्की। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following ministry celebrated the usual India Bright Future Power 2047 initiative of the government of India under Azadi का अमृत महोत्सव from 25th to 30 July 2022 across the India? तो 15 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, both B and C, तब मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 16 है, in which state India's first all women cooperative bank will be established? तो 16 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 17 है, in July 2022 the Supreme Court ruled allowing an unmarried woman to have an abortion of dash period? तो 17 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24 वीक्स, ठीक है, 24 वीक्स पीरियड। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर वाज द ग्लोबल टाइगर डे 2022 सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज्ड ऑन 29 जुलाई? तो 18 का राइट ऑप्शन नंबर टाडोबा टाइगर रिजर्व चंद्रपुर महाराष्ट्र। 19 क्वेश्चन नंबर, 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन सेबेस्टियन वेटेल जर्मनी अनाउंस रिटायरमेंट हिज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी फार्मूला 1 रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 20 है, विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सेंसस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 आर राइट। द 11th एग्रीकल्चर सेंसस वाज लॉन्च्ड बाय द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इन जुलाई 2022। Agriculture census in India was started in 1970-1971 and agriculture census is done every 5 years.
21 है which statement is true regarding the construction of the world's first vertical city in Saudi Arabia. तो 21 correct answer है option number D, all of the above. This city has been named the line. There will be no roads and no cars will run in this city. There will be no pollution and no carbon emission of any kind in the city, and the length of this city will be 170 kilometer. 22 है Prime Minister Narendra Modi released a special postage stamp to commemorate which anniversary of Mumbai newspaper. तो 22 correct answer है option number D, 200 Mumbai newspaper of 200 anniversary. 23 है Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of various projects collectively worth over 1,000 crore at Savarteri in Savarkantha district of which state? तो 23 correct answer option B, Gujarat. 24 recently the Indian cabinet has approved the merger of Bharat Broadband Network Limited (BBNL) with which? तो 24 का ऑप्शन सी BSNL. 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड. तो 25 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव आर मैच्ड. तो स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, दीनदयाल स्पर्श योजना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड पीएम दक्ष योजना सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री. 26 रिसेंटली इंडिया हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर लॉजिस्टिक ऑफ कंटेनराइज्ड वर्क थ्रू इनलैंड वाटरवे विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. तो 26 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश. इस आपका क्वेश्चन नंबर 27 है. With reference to monkeypox, consider the following statement. 27 correct answer option C. Both 1 and 2 are right. The first case of monkeypox in India was confirmed in Kerala. The first case of monkeypox infection in humans was reported in 1970 in Republic of the Congo. 28 है recently which state has become the first and only state in country to establish internet service. तो 28 correct answer option B, Kerala. 29 है who was awarded the Grand Cordon Honorary Order of the Yellow Star Suriname High Civilian Honor. तो 29 correct answer है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी रविशंकर. 30 नंबर क्वेश्चन है which mascot has been launched by Department of Consumer Affairs, Government of India to empower consumer and make them aware about their right. तो 30 का ऑप्शन सी जागृति. 31 है which Indian ministry has launched the platform under ENM on the occasion of the State Agriculture and Horticulture Ministers conference in Bangalore. 31 correct answer option number D, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. 32 है which company has unveiled India's first indigenously developed lithium ion cell. तो 32 correct answer है ऑप्शन नंबर बी, आपका ओला इलेक्ट्रिक. 33 है detailed guidelines for the mission Shakti scheme have been issued by the Ministry of Women and Child Development with reference to this consider the first statement. तो 33 का right answer है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 आपका चारों सही है. The two sub schemes of Mission Shakti are Sambal and Samarth. The Sambal and Sam scheme is for the protection of women. The Samarthya sub scheme is for the empowerment of women. And Nari Adalat is a component of Sambal sub scheme. 34 है which statement is true regarding the country's first indigenous vaccine against cervical cancer. तो 34 का ऑप्शन डी, all of the above are right. The name of this quadrient human papilloma virus vaccine PHPV is Cervarix. It has been made jointly by the Serum Institute of India (SSI) and SII and the Department of Biotechnology (DBT) of the central government. Union Ministry of State Jitendra Singh and SII Chief Adar Poonawalla launched this vaccine. 35 of India first electric highway is planned between these two cities. So 35 correct answer option number C, Delhi and Mumbai. With reference to Global Gender Gap Index 2022, consider the following statement. So 36 correct answer option number D, 1, 2, 3 are right. This index is issued by the World Economic Forum. India ranks 135 out of 146 countries in this state. Ireland tops the ranks and is the only country to eliminate more than 90% of gender gap. 37 between which two countries was the Sea Guardian 2 maritime exercise held from July 10 to July 13, 2022. So 37 correct answer option C, China and Pakistan. 38 है who was awarded the Order of Rising Sun Gold and Silver Star by the government of Japan in July 2022 for his contribution towards strengthening economic ties between Japan and India. So 38 का ऑप्शन है नारायण कुमार. 39 है which of the following statement are true regarding Shinzo Abe. Option number D, 1, 2, 3 are right. So he was shot at an election campaign event in the city of Nara, Japan. Shinzo Abe was the longest serving Prime Minister of Japan. The government of India honored Shinzo Abe with the Padma Vibhushan, India's second highest civilian award in July 2021. 40 है which statement is true regarding Wimbledon 2022. The 40 का ऑप्शन सी, both 1 and 2 are right. तो Novak Djokovic defeated Australia's Nick Kyrgios to win the 21st Grand Slam. Kazakhstan Elena Rybakina defeated Tunisia owns Javier to win the women's single title at Wimbledon 2022. 41 है where was the first Indian Animal Health Summit 2022 held. तो 41 का ऑप्शन भी न्यू दिल्ली.
42 question number, Prime Minister Narendra Modi unveiled the national emblem on the roof of the new Parliament House. With reference to this, consider the following statement. The 42 correct answer option number C, 1 and 3 only. The national emblem is made of bronze. The total weight of this emblem 95 kg. ये पर गलत है. और the national emblem is 6.5 meters high. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है. Where was the natural farming conference organized in July 2022? To 43 correct answer option B, Surat. 44 है, which expressway is being developed as the first elevated under urban expressway in India? The 44 correct answer option B, Dwarka Expressway. 45 है, which institution has topped the national institution ranking framework India ranking 2022 in the overall ranking category? Option number C, IIT Madras. Question 46 है, which of the following city has been chosen as the first tourism and cultural capital of the SCO region? The 46 का right answer option number D, Varanasi. 47 in the which country for 94-year-old Bhagwani Devi Dagar from Delhi won a gold medal in 100-meter sprint and 2 bronze medal in shot put and discus throw category at the 2022 World Master Archery Championship held in July 2022 in which country? The 47 correct answer option is Finland. 48 है, red panda is being sent to Singalila National Park of which state under the Red Panda Revival Program in India? The 48 correct answer option number C, West Bengal. 49 है, with the aim of empowering indigenous weavers and providing financial assistance to their families, which state government launched the Swanirbar Nari scheme? तो 49 का ऑप्शन डी, असम. कुछ आखिरी क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, which of the following countries will overtake China to become the world most populous country in 2023? तो ऑप्शन नंबर सी, इंडिया. तो इस प्रकार हम देखा आज का वीडियो. तो आज के बस इतना ही. आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद.